A warm welcome to all my lovely audience on ICTS today. Today we're going to be having conversations on nutrition and fitness because I have with me the very beautiful Miss Rachna Mohan. She is a nutritionist and fitness coach by profession, and she has so many knowledgeable insights to offer us. So hi ma'am, how are you and how does it feel to be here? I'm very glad to be the part of this show. And thank you for giving me this opportunity to reach to my audience straight away, Mhm. right? Yep. Yeah. With that being said, I think we should get started because I am very excited to see how this goes. So can we get started? Yeah, sure, positively. Same here. Yeah. Yes, so let's just start by getting to know each other. So, like I said, you are a coach and nutritionist. So, what exactly drove you into choosing this profession? Uh, okay, so it's a long story, but I'll just give you the nutshell. Yep. As a child, I was overweight. Oh, So from that day onwards, the struggle of losing weight started at that mhm. point of time. And post marriage, I got a very, acute disease, Oh, ulcerative colitis. okay. So we went a lot of hospitals. My husband and me, we Mhm. visited a lot of hospitals. Started with the medication and all that, but nothing happened. Mhm. So we both tried hard, to explore. And from that day onwards, we make it a ritual of our life that we should follow good habits. We changed our lifestyle completely. So from there onwards, the journey started, and this is the outcome. Mhm. What you have been seeing right now. So this started almost 30 years ago. Okay, nice, interesting story because it does prove that you need to have a setback in order to discover what you truly need in life, and your story did proper justice to it. So, great job on. Yeah, actually, the thing is, though I tried hard when I was young to lose weight, but I Mhm. was not aware of the things, Oh, how to go for healthy diet, कैसे workout को अपने regime में डाला जाए. that's. So I did it very randomly at that Mhm. stage. So the कहीं ना कहीं ये चीजें मेरे दिमाग में रह गई कि अगर हमें अपने आने वाली जनरेशन को या जिन लोगों को जरूरत है अगर हमें उन्हें गाइड करना है तो वी That's शुड बी कंप्लीटली इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स. correct. सो दैट वाज द इनिशियल जो आप बोल सकते हैं कि एक बिगिनिंग वहां से हुई. एंड देन इट वाज ट्रिगर्ड बाय माय हेल्थ इश्यूज. Okay. एंड yes, and then formally I adopted it as a profession. Very, very nice to see. Your story was inspiring and great at the same time. So great job on that. So with that being said, let me connect to my next question. So being in this field, I'm sure you know how important physical fitness is. So what is your opinion on the importance of physical fitness in today's world? So basically, nowadays, even it is more important because the reason is we all, we are working at a corporate level and people are sitting almost 10 to 12 hours in front of laptop. There is no mobility, no movement. So Yeah. nowadays, rather it is more important, because जो lifestyle diseases है वो कब आके आपको पकड़ लेती हैं आपको पता भी नहीं चलता है. And we are so busy that we wait something to happen, कि अच्छा डायबिटीज हो जाएगी उसके बाद हम स्टेप लेंगे या मान लीजिए कोई प्रॉब्लम पकड़ लेगा उसके बाद हम स्टेप लेंगे. वेयर एज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फिटनेस जो है आपकी हर फील्ड में या हर तरीके से आपकी हेल्प करती है बेसिकली. आपकी चाहे वो ब्रेन हेल्थ है या आपकी फिजिकल एक्टिविटी है या मान लीजिए आपके बोन्स और आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करना है. और इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डिजीजेस, so everywhere it is going to help you out, right? So I suppose physical fitness आज के टाइम में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंटेन करना. Right. So with that Yeah. being said, physical fitness is very, very important, and I'm sure our audience will get a bit of this through your insights. So thank you so much for that. Let's move on to our next question again into fitness. So right now we are seeing that weight loss is becoming very, very popular. People are running behind weight loss techniques, but sometimes they choose the wrong way to lose weight, which brings adverse reactions. So what do you have to say about the healthy ways of losing weight?
Yes, I always suggest my clients, my audience, if you go to my page also, it always says sustainable healthy weight loss. So which means weight loss should not be sudden. It should you should not go for fat diets. Okay, so protein oriented diet or only fiber oriented diet or only liquid diet. Those are not required at all. Rather उनकी वजह से बहुत सारे डेफिशिएंसीज हो जाते हैं, आपका स्किन का ग्लो चला जाता है, आपका हेयर लॉस हो जाता है, एंड टू सम एक्सटेंट आपका जो मसल मास है वो भी रिड्यूस हो जाता है, सो विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. सो सस्टेनेबल हेल्दी वेट लॉस का मतलब ये है कि यू शुड अडेप्ट दिस ग्रेजुअली. Okay, so you should not target more than 500 grams to 1 kg in a week, that too with home cooked meals. And you should at least 20 to 25 minutes आपको हर रोज अपने वर्कआउट पे देने चाहिए, बी इट वॉकिंग, बी इट स्विमिंग, बी इट साइकिलिंग, और बी इट जिम वर्कआउट, राइट? सो आई डू नॉट बिलीव on those things which we cannot perceive it as a lifestyle change. So I always go for a set of habits which you need to form, and that will lead you, that will take you, अब जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप उम्र में बड़े होते जाते हैं, आपके लिए चीजों को सस्टेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ कि अच्छा झट से आपको 10 किलो वजन रिड्यूस करना है एक महीने में. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. ओके, सो देर आर मेनी हेल्दी वेज. सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको फैट डाइट्स के पीछे नहीं भागना है, होम कुक्ड मील्स लेने हैं, आपको एक्सरसाइज करनी है. यू शुड ट्राई टू रिड्यूस योर शुगर इनटेक. जो शुगरी ड्रिंक्स है या जो प्रिजर्वेटिव से भरी हुई चीजें हैं, अनकुक्ड जो स्टफ है, या मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अनहेल्दी स्टफ जो रहता है, जो आपके कैबिनेट में हर समय इजीली अवेलेबल है. सो वी शुड स्टॉप यूजिंग ऑल दोज थिंग्स. एंड आई फील कि जितना हम होम कुक्ड मील लेते हैं उसे भी हम मॉडिफाई करके बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वी कैन मेक एंड सस्टेन ऑन दैट, राइट? सो सस्टेनेबल वेट लॉस का मतलब मेन ये रहता है कि आप अच्छा खाना खाएं, बैलेंस्ड मील प्लेट लें जिसके अंदर गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन है, गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोबायोटिक्स है, मिनरल्स है, विटामिन है, फाइबर है, एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, राइट? सो दिस इज द वे दैट यू कैन रिड्यूस वेट, एंड योर फूड शुड नॉट बी ओनली हेल्दी, इट शुड बी टेस्टी ऑल्सो, राइट? सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारा ये होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हेल्थ फूड जो है वो बोरिंग है. सो आई मस्ट से दैट डू नॉट परसीव इट एज अ बोरिंग. अगर आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाएंगे तो डेफिनेटली वो काफी सस्टेनेबल, काफी हेल्दी और टेस्टी होगा. Right. Very nicely said, because even I had that same perception that healthy food is not tasty. So I'm glad you got out that point, and I'm sure our audience will also benefit from it. So great job on that. And also, I'm sure in your field of nutrition, you might also focus on nutrition in children. So what do you have to say about that? या सो नाउ डेज जो हमारी जनरेशन है, जो मिलेनियम जिसको हम बोलते हैं, आई मीन दे आर एक्सपोज टू लॉट ऑफ सोशल मीडिया, राइट? एंड दे हैव वेरी इजी एक्सेस टू ऑल दीज जोमेटो एंड स्विगी एंड ऑल दैट. सो आई फील उनको, आई मीन इट्स अबाउट, मैं पेरेंट्स को ये चीज समझाना चाहूंगी कि आप अपने घर का एनवायरनमेंट ऐसा कीजिए, आप अपने घर के अंदर खुद ये सब चीजें फॉलो कीजिए, सो दैट जो बच्चे हैं आई मीन वो उस चीज को ज्यादा फॉलो करें, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन रेडीमेड स्टफ और रेडीली अवेलेबल स्टफ. सो जितना भी बाहर का स्टफ है उसके अंदर सोडियम ज्यादा है, उसके अंदर अनहेल्दी ऑयल ज्यादा है. सो आई वुड रिकमेंड, आई वुड दिस इज फॉर पेरेंट्स कि अगर वो अपने घर का माहौल हेल्दी रखेंगे, एनवायरनमेंट अच्छा रखेंगे, तो डेफिनेटली जो बच्चा है उसका इंक्लिनेशन भी वैसे ही बनेगा, राइट? सो आई मीन एज आई मेंशन्ड इन द प्रीवियस आंसर ऑल्सो कि हम हेल्दी फूड को टेस्टी कैसे बना सकते हैं, दैट इज द टास्क. आई मीन बाकी सब चीज अपने आप जगह पर आ जाएगी. सो आई फील कि अगर हम बच्चों को अच्छे से उनकी मनपसंद चीजों को घर पे बना के देंगे तो डेफिनेटली दे वुड लव टू हैव ऑल दोस थिंग्स. Yes.
And I hope the Yeah. parents watching this will they have some takeaways. So thank you very much for sharing your answer on that. My next question, I was looking forward to this question since the beginning of the interview. So a lot of people right now they're using anti-aging creams. I've seen so many of my friends and my relatives still using those creams to look fit, but you look so fit and glowing even at this age. So what do you have to say about people to help them maintain their figure as they are growing old as well? So there are two, three pointers which I want to share. One is कि आपको खाना अच्छा है, हेल्दी खाना है, मॉडरेशन में खाना है, एंड यू शुड हैव बैलेंस्ड मील प्लेट, राइट? सो इट्स नॉट ओनली टू स्टफ योर स्टमक, आपने अपना पेट तो भर लिया, लेकिन कितना किस चीज से भरा है, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग आई वुड रिकमेंड कि आपको वीक में एटलीस्ट 150 मिनट्स, विच मीन्स अराउंड 20 to 25 minutes every day, you should work out. Yeah. And third thing, which I recommend to my all clients, that they should have at least 7 to 8 hours of peaceful sleep. And last thing, I must say that we should sit at least 10 to 15 minutes under the sun to, जो आपको एक विटामिन डी है, that is very very important, Mm. right? तो आज की डेट में मैं जितने भी मेरे क्लाइंट्स जिनको भी मैं देखती हूँ, दे हैव lack of B12 and vitamin D. So which is जो जिसको आप बोलेंगे ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, बट वी डू नॉट हैव टाइम, और वी मे नॉट बी दैट अवेयर ऑल्सो. Yes. So I suppose these are the simple pointers. और जहां तक creams की बात है, I would say कि we can simply go for moisturizers. Yeah. And the next thing which we can apply on daily basis is sunscreen. So I suppose these two things which we can use on daily basis. And the most important thing, that we need to clean our skin on a regular basis, right? uh, I mean, stay hydrated, sit under the sun for 10 to 15 minutes, eat healthy, work out for some time, and you are good to go. Definitely, those tips coming from you will make a big difference in people's lives. So, thank you very much for sharing your thoughts on that. Let's go on to my next question. I'm sure this question is very, very close to your heart. So, what is something that you love about your profession very much? Yeah, so I just love interacting people around the world, and I really feel very motivated when I can help, or if I can, अगर मैं किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज ला सकती हूँ, या उनकी लाइफ की थोड़ी सी भी जो इश्यूज है उन्हें रिजॉल्व कर सकती हूँ, सो दैट गिव्स मी द मोटिवेशन कि मैं और इस प्रोफेशन के अंदर अपना योगदान दे पाऊं. And the second part of this profession is, as I love to make food videos, so मुझे बहुत अच्छा लगता है when I come across different cuisines, और अलग अलग तरह के मैं खाने देखती हूँ. And very I mean, उसके अलावा it's not about food, it's not about people. आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत बहुत सारी learnings आप ड्यूरिंग द डे गेन करते हो अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट हेल्थ. सो वो एक चीज है जो मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखती है अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए. Yes, very, very great job on giving me the answer for that question. Great job on that. Let's move on to our next question. So, I'm sure in your field there are so many myths because I personally watch so many reels where there are so many myths about nutrition. So, if you have to bust any myths about nutrition, what would they be and why? सो देर आर टू थिंग्स जो मैं बहुत ज्यादा मुझे समझाना पड़ता है, बिकॉज हमारे दिमाग में ऐसे बैठ रखा है कि तेल अच्छा नहीं होता है या घी अच्छा नहीं होता है. सो ऑयल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फूड. अगर आप ऑयल नहीं लेंगे तो आपके जो बाकी रिसोर्सेज हैं, प्रोटीन है, कार्ब्स है, फाइबर है, वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा. And second, it plays a great role in keeping your digestion system very well. So अगर आपकी डाइजेशन अच्छी होगी तो आपकी बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी. एंड सेकेंड थिंग, हमको ऐसा लगता है कि हम कम खाएंगे तो हम जल्दी वेट लूज कर लेंगे. तो बट दिस इज ऑल्सो अ मिथ. जितनी बार आप मील स्किप करोगे उतनी बार आपको हंगर पैंग ज्यादा आएंगे, एंड यू माइट एंड अप ईटिंग मोर, right? So it's going to add extra calories. So it's always good to have proper meals. Do not skip any meal, and do have oil quantity in moderation. Or
अच्छा ऑयल खाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट? सो दीज आर द टू थिंग्स विच आई वुड डेफिनेटली आस्क माय ऑडियंस टू फॉलो. Yep, I will definitely tell my mom about the oil thing you said because even she believes that oil is very bad for health. So she often uses Oh. olive oil and she puts coconut oil, but I will definitely tell her this. Thank you very much for that personal learning. With that being said, we've now come to the last question of our interview. This is a very fun question, so you can be as open as possible. So, if not a person in the nutrition field or a fitness coach, what do you think you'd be and why? ओके, शायद बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि मैं टीचर रह चुकी हूँ. ऑलमोस्ट Okay. 13 years प्लस मैंने टीचिंग की है, एंड देन आई सर्व्ड वन एनजीओ ऑल्सो. And I mean, I always love to have, younger crowd around me. So sometimes, बच्चे जो हैं आपको बहुत एनर्जी देते हैं, टीनेजर्स आपको बहुत एनर्जी देते हैं. सो आप ऐसा समझिए कि पहले मैं क्लास में जाके उनसे एनर्जी लेती थी, एंड नाउ अ डेज अभी ऑनलाइन है. जो मेरा इंटरेक्शन है, मेरी क्राउड जो है वो ऐसे तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 16 साल के बच्चे से लेके आई एम गिविंग मील प्लान्स एंड आई एम वर्किंग फॉर 63 65 years old people. So this is one of the fact. And at the back of my mind, when I was in my teens, I would want to be a Miss India also. It's quite funny. Yes. बट राइट नाउ ऑल्सो मैं कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, और अपने बच्चों को बोलती हूँ कि मम्मा वांट्स टू, मम्मा को स्टेज पे जाना है, एंड आई जस्ट वांट टू बी देयर, एंड आई वांट टू टेक माय मॉम एंड माय मॉम इन लॉ देयर, Mm-hmm. बिकॉज दे great role in my life. Yes. And yeah, and the good thing is my family supports. My husband is very, very supportive. My kids are very, very encouraging. So अभी भी कभी कभी ऐसा मौका लगता है तो definitely I would love to go on the stage. Yes. And I wouldn't be surprised to open a newspaper one day and see your face in there. So, all the very best for accomplishing all your dreams. Thank you so much. Thank you so much. So, with that being So, said, we've now come to the end of this interview. I must say, we had a great session for 20 minutes where we shared so many insights. So, thank you very much for giving us your time. And I had a great time hosting this session for you. yeah, thanks a lot. Thanks a lot. Thank Thank you you. so much. Yeah.